नवला किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna, I welcome you all, the mellowful devotees and listeners. I would extend my gratitude towards the senior Vaishnavas or devotees from International Society of Krishna Consciousness, that is Iskcon, who have decorated this assembly. I would also love to welcome all the listeners who have joined in huge numbers through the medium of Facebook, YouTube, Zoom, etc. And in particular, for the welfare of the society on this auspicious occasion of Krishna Paksh or Shraddha Paksh, in reverie of their ancestors like Sitaram, Gomati Devi, Shankar Prasad, Basanti Devi, Baldev Das, Vishwambhar Lalji, and Radha Govind Goswami Maharaj, disciple Vishwambhar Prabhu. And in reverie of such pious ancestors, the organizers of this beautiful katha, the inhabitants of Seattle, Manoj and Nidhi Agarwal, and their mother who is in Nepal, Kathmandu. So I welcome you all on the second day of this Shrimad Bhagavatam Katha, and our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. So what exactly is this Pitru Paksh or Shraddha Paksh? And is it necessary for us to do the rituals for our ancestors, that is Tarpan, and how, when it started, who all performed it, and what benefit they got? So there are so many things that should be discussed. And in the upcoming 15 days, we will discuss on these topics. But today, हम सब मनुष्यों की 7 कमजोरी के ऊपर चर्चा करेंगे. So today we are going to discuss the 7 shortcomings of our human life.
You all don't have because you all are मैं great. मेरे जैसे लोगों की But बात if I करूं talk about people like तो मुझ me, जैसे लोगों की 7 कमजोरी है so people like me और have बुद्धिमान 7 व्यक्ति pitfalls or अपने shortcomings. गुणों पर And दृष्टि नहीं an रखता, intelligent अपनी person कमजोरी पर दृष्टि रखता है। doesn't focuses on मैं his बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत strengths अच्छा but गाता हूँ, on उसकी प्रगति their रुक जाती है। shortcomings. A person who thinks तुम that बहुत I'm अच्छा a गाना great सीख लिए हो singer तो अब तुम्हारे or have अंदर learned कौन सी खामी well, है, क्या कमी then है, we उस पर should try to कंसंट्रेट करो focus on और उसको what सुधारने का प्रयास are करो। our shortcomings and failures, and we सो should try to work हम upon सब them. के जीवन में साथ मुझे कमला देवी दासी माता जी दिखाई दे रही हैं, जो हमारे कथा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही हैं और इसी प्रकार से अनेकों कथाओं में इस हिंदी कथा को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करती हैं और कथा के बाद हजारों व्यूअर इंग्लिश वाले भी होते हैं। और विशेष धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आज कुटिया में भागवत भवन में परम पूज्य वेदव्यास स्वामी महाराज और So today, Param राधा Pujya गोस्वामी महाराज आए। Radha Goswami Maharaj आप and सबका आना हुआ इस Ved पवित्र दिन में, ये आप सबकी Priya कृपा ही है। Goswami Maharaj arrived लेकिन by the 2-2.5 घंटा mercy of ड्राइव devotee. करके यहाँ पर आना, बहुत बहुत मेहनत करना, सेवा करना और फिर तुरंत अपनी कुटिया में पहुंच जाना इस कथा का ट्रांसलेशन करने के लिए। सो मैंने इन 2 दिनों में देखा बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कमला माता जी सेवा कर रही हैं। आप लोग भी कभी इंग्लिश में मूड हो तो स्विच कर सकते हैं, नीचे लैंग्वेज ऑप्शन है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप देख सकते हैं 2.5 घंटे पहले ये लोग यहाँ पर थे। और जैसे ही कथा का टाइम हुआ वे यहाँ अलाचोआ से निकलकर टेम्पा पहुंचकर अपना ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है। सो धन्यवाद। सेवा करना यदि सीखना हो तो इस प्रकार से होना चाहिए, जिम्मेवारी पूर्वक। आइए तो हम मनुष्य जीवन की 7 कमजोरी पर चर्चा कर रहा हूं। So we are discussing about the 7 weaknesses of human life, and it includes the glories of the Pitru Paksh, and we'll start from here. अब ये मनुष्य की 7 कमजोरी किसने कही, पहले तो ये बता दो। ये लिखा है श्री वेदव्यास मुनि ने, it was stated by Vedvyas Muni सूत गोस्वामी, and spoken by Sut Goswami. आप नीचे देख सकते हैं। And if you see the verse in front of your screen, the 7 weaknesses of human life are as follows. नहीं ना मत्सिरोणो पिअहिंसका तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता ये दंभिकापि त्रुमात्रु दूषका। पितृपक्ष है यहाँ पर। ये दंभिकापि त्रुमात्रु दूषका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्री व्यास मुनि लिखते हैं, सूत जी कहते हैं, हम Sri मनुष्य Vedvyas ji writes and Suji says that the first and foremost shortcoming of human life मनुष्य की सबसे पहली is कमजोरी आप श्लोक में
you can see in the verse, Satyen Hina. What is this shortfall? Gradually, as the time is elapsed and elapsing, the humanity and human life is getting devoid of truth. We speak falsehood just to get some work done, and we are so accustomed to speaking lies, then even if it's not required or not necessary, but yet we speak lie because we are so much habituated. And I came late today as I was listening to the preaching of Radha Raman Maharaj. And today, like you, I got an opportunity to sit at his lotus feet and listen to him. And Amitabh Prabhu was trying to reach me. So I said that you listen to 365 days, and today I have got this opportunity. So you should spare me 30 minutes. Radharaman Maharaj has his own strength, and he speaks with so much simplicity. And the main point that he discussed was that there are so many buildings. I'm trying to imitate him, although I'm sure I won't be able to do the same. So that what could be the weight of all these buildings? But all this weight falls upon Mother Earth. And there are so many mountains. And that weight too is on Mother Earth. And so many people, trees, and so many species of life forms are on Earth. So Mother Earth never feels the weight of all these people. So Radharaman Maharaj said that 60-pound or 150-pound person who speaks lie, his weight Mother Earth cannot tolerate. The earth shakes. This liar is walking on me. When we speak lie, and when he walks on the earth gets disturbed. That such a liar is keeping his feet on me. Mother Earth is unable to tolerate this weight. In India, we usually say that you are a burden on Mother Earth. So who actually are burden on earth are people who lie. Mother Earth will not be worried if we weigh more, but if we lie, then Mother Earth is unable to tolerate that, and she gets so much distress and pain. And the more we are progressing, the more we are getting far from truth. And when we lie, then our effulgence and potency gets reduced. And those who lie, when they die, Yamraji
has a certain place for them in hell where they are given an opportunity to repent and are punished severely. आप सब लोग जानते ही हो और आप सब लोग सत्यवादी हो, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, So पूज्य our Guru Bhagwan, गोविंद गोस्वामी महाराज, आज संतों के बीच में बैठा हुआ ना तो Radha Govind Goswami Maharaj, and as we got an opportunity to sit amongst the sages and saints, महाराज कहते थे कि पहले so के युगों I में remember them. लोगों का वचन, लोगों की वाणी He, पत्थर में लकीर our Guru Maharaj used to say that पत्थर में earlier जानते हैं, पत्थर में आप लकीर a person's speech तो वो एक बार खींच ली तो was जीवन भर रहती है। equivalent to पहले के लोगों marked की वाणी on पत्थर में stone. लकीर एक बार बोल दिया If they said something, they used to stick to that. इसीलिए तो हम गाते हैं, And that is why we sing. हे रघुकुल रीत सदा चलियाई। गाओ गाओ गाओ, क्योंकि हमको तो गा के ही खुश रहना है हमारी तो ये रीत है नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कलियुग रीत, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं थोड़ा आप लोगों के लिए। कलियुग रीत सदा चली आई, वचन जाय पर प्राण न जाई, वचन जाय पर पैसा न जाई। अरे वचन जाए तो जाए है, लेकिन प्राण नहीं जाना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए। सो गुरुदेव कहते हैं कि पहले So के जब Gurudev says that earlier people's speech, a vow was equivalent to marking on a stone. But gradually, as the time passed, the intellect and morals of society got degraded, and it came to a mark on the sand. So it will just remain for 5-10 days or maximum month or so. But the speech today is like marking on water. It will be destroyed instantly. પછી તો હું તમને શું કહું, મને અમારા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રની ગંગા સતી યાદ આવે. And I remember Ganga Sati from Gujarat. મમ્મી બધા ગુજરાતી એટલે એક આવા દઉં છું. મેરુ તો ડગે પણ જેના પણ નો ડગે પાનબાઈ. बहुत सुंदर ये पद समझने लायक है कि मेरू तो डगे पण जेना प्रण ना डगे. पर्वत डिग जाए, पर्वत हिल जाए, लेकिन वाणी नहीं हिलनी चाहिए. So even if the mountains move, my vow or speech should not be changed. That is the quality of a devotee or a gentleman. But in Kali Yuga, we are devoid of truth, and it is getting degraded day by day. And further, the second
pitfall is matsaronopi hinsika. The second shortfall is matsar, that is to get jealous about other people's progress. And amongst us, if someone is successful or if someone is progressing, then the other person gets agitated, his heart burns. So they are unable to do anything, yet they are always distressed and disturbed by others' progress. In the beginning of the war between Mahabharat, so Yudhishthir and Duryodhan's soldiers were standing in front of each other, and Yudhishthir and his brothers bowed down at the lotus feet of Bhishma Pitama and Dronacharya, and they all blessed him to have victory. And Duryodhan started abusing these two old men. Are they in our team or the team or the opposite team? Because they are giving benediction to the opposite opponent. So he was jealous, but he never got this intellect that I can also follow the suit, that I can bow down at the lotus feet of the seniors and get the benediction from them. So when we do something good, people get agitated and jealous. They will ridicule and criticize you, but they will never think that let me also try to serve. But no, they will not do anything on their own, but they will get jealous of progress of others. And such people never gain weight because they are so jealous. So this is the pitfall of human life. So it might not be in you, but it's there in others. So I'm just telling you. And the third is hinsaka. Today, people are becoming more violent and they have a tendency to give distress to others. If you keep your hand on your heart, you all are devotees and you're good. But if you see in the world that a person, usually there is a quality that if someone sees somebody who is doing good, they won't be that happy. But if they see somebody distressed and anxious, they will be satisfied. So by just seeing others unhappy and becoming happy is becoming the norm of this society. And the fourth shortcoming is Trishna. And if you break this word, Trishna Akulascha. And because of so, Trishna is thirst. So it is not only about drinking water, but all our senses have thirst or desires. The ears have like to hear some film, Bollywood song, and eyes have desire to see something good. The skin has desire to touch someone, and the tongue has thirst
to taste something good. So this thirst for all the sense organs, and the more we are engrossed in sense gratification, the more distressed we get. So there was one discussion. Pran Govind Prabhuji asked Vedapriya Swami Maharaj, why a sannyasi in Iskcon is called Maharaj? Just such a great designation. And when it was my turn, I said that there is a conversation between Yadu Maharaj and Dattatreya, and he asked Dattatreya that I'm great king, that I'm such a great king, but I'm called Raja, and you don't even have decent clothes to wear, but you are called Maharaja. So how is it possible? So we can understand that a person becomes great is decided by what? Just by getting or winning over the material earth is not a king, but an actual king is the one who controls his own senses, and that is why they are called Maharaj. And Mahabharat starts from there, that King Bharat had won the whole world, and he went to his Guru Maharaj and said that the earth is being controlled by me, and Bharat, by my name, the world is getting worked upon. And but honestly, I want to tell you that I'm yet not satisfied. So his spiritual master said that you might have become king, but you have not been able to control your senses, so you're not Maharaj yet. Unless we are able to curtail our desires of sense gratification, we won't be satisfied. And we will be distressed. Even if we are wealthy, it will not satisfy us or give us bliss. So we have to get relieved from this thirst of sense gratification. And the fifth is, and the fifth shortcoming is, if you see, ashram dharma varjita. We are not following our principles of ashram, and it applies to all of us. This is our shortcoming. The humans were formed, and how we should live our life, the God has taught us. Our life is divided in 4 stages, and it is called ashram. If we have 100 years, if we live for 80 years, then we have to minus accordingly. So first 25 years should be brahmachari ashram. Today, in the world of social media and exposure in such
environment, are our kids following brahmacharya till the age of 25? And we are not following that. That because of that, the later life becomes dangerous. आश्रम धर्म कोई नहीं निभा रहा, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, So till 25 years brahmacharya, and from 26 to 50, next 25 years, so you could be a householder or you can continue to be a brahmachari. तो फिर गृहस्थ आश्रम, लेकिन ये गृहस्थ की मौज मजा कब तक? And till when the householder can enjoy this lifestyle? Till the point they are 50. As soon as they cross 50, जैसे ही 50 पार किए तो हमारे, as soon as they cross 50, 50 के बाद कौन सा see नंबर how आता है? accurate our Vedas are. So what comes after 50? Ikavan, that is 51. Ikavan, right? You should go alone to the forest. And the best vana is Vrindavan. And if you don't go, your kids will send you soon. It's better that we should go with love and respect. So that is Vanaprasth. So from 51 to 75, we should follow the Vanaprasth ashram. People who are in US, etc., may not be possible for them to go to the forest, but gradually we should get to detach ourselves from the material things, and husband and wife should together try to follow the Vanaprastha ashram and perform devotional service towards the Lord. 26 से 50 गृहस्थ आश्रम और 51 से लेकर 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम। अब लगता है कि 75 के आगे जा पाएंगे पिज्जा पास्ता वाले, तो फिर एक आश्रम बचता है। So the last is 75 to 100, that is sannyas ashram. Mothers don't get married. They're not going to live 75 plus. Then only they can take sannyas. But this is the system in our ashram system. But in Kali Yuga, this is not seen anymore. And that is why it is mentioned as ashram dharma varjita. We're not following it. And the sixth shortcoming is explained further. Bhikapi trumatru dushaka yedambhikapi trumatru dushaka saptah yagyena kalo punantite. हमारा छठा दोष है, and the sixth shortcoming or pitfall is that dambhika. We are becoming proud or hypocrite. So damb means hypocrisy. Whatever we are not, we try to show that. When we see when we see all of you in, and you see how sincerely everybody is listening, we think that they are all the demigods, and
after Shukdev Shanak, लेकिन these जैसे are ही the people. ये कथा But as समाप्त soon होती as है, the लॉग आउट हो Katha, जाएंगे, they एक log out वास्तविक from रूप शुरू Zoom, होगा। then कोई their चंडी माता, कोई काली माता, कोई भवानी माता, हाथ में त्रिशूल लेना केवल बाकी see होगा। their actual faces. लेकिन हम लोग को दंभ कितना आता है, आप But विचार how कीजिए। much hypocrite we have दंभ become. माने जो है नहीं लेकिन फिर भी दिखाना। अब देखोगे जिस आदमी के पास धन नहीं होता ना, A person who वो doesn't have पूरा enough पूरा money, प्रयास करता है कि वो he दंभ वो दिखाए shows कि मेरे off पास बहुत that he धन is है। rich. धन नहीं होने पर भी दिखाना कि मैं धनी हूँ, ये दंभ है। This is hypocrisy. और बहुत बहुत धन होकर भी धन And नहीं if you दिखाना, have ये लोभ है, ये affluence, दंभ है। and if you show that भक्ति you don't नहीं have है anything, लेकिन फिर भी then that दिखाना कि also मैं is बहुत बड़ा भक्त hypocrisy. हूँ, मैं बहुत And बड़ा if you डिवोटी, are ये दंभ devoid है। of devotion, but you pretend that you are a जो great अपनी devotee, स्थिति नहीं है that लेकिन also फिर is भी उस स्थिति को hypocrisy. समाज के सामने दिखाने का प्रयास, ये दंभ है। और दंभी से तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। And the Lord never gets तो मनुष्य satisfied ये दोष with है। a hypocrite. मैं ज्यादा दोष की Hypocrite. चर्चा न करूं, अंतिम दोष मनुष्य का So the last जिस shortcoming मुकाम पर हम लोग of होते this हैं, human वो life कहते हैं is ये दंभी का पितृ मातृ दूषका। Pitru Matru Dushaka. लगभग मनुष्यों की ये कमजोरी है So कि वो this अपने is the माता weakness और of पिता human, के प्रति that अनेकों प्रकार का दोष करता है। that we माता और पिता के प्रति perform द्रोह करता है। offenses against our हाँ, माता parents, पिता मर जाने के बाद तो and फोटो when they फ्रेम are no महंगी more से महंगी फोटो फ्रेम में in this टीके world, हार पहनाते, then we शराब भी put बहुत अच्छा करते, expensive लेकिन frame जीते जी पानी का ग्लास भी नहीं पूछते। and perform मरने के बाद तो sacrifices for them, तुम्हारा बहु but when सारा they're है, alive, we don't એનો even સ્વભાવ કેટલો સારો offer હતો। them water. અને જો સાક્ષાત આવીને ઈ ઉપર બેઠા બેઠા સાંભળતા હોય કે હું And તને અત્યારે સારો our લાગુ છું, તારો તો સ્વભાવ ancestors છે, are listening. દેવતા હું જ્યારે જીવતો હતો ત્યારે જ તે મને ક્યારે પૂછ્યું That નહીં। when we were alive, you never bothered about us. ये दोष है। So this सब is लोग में नहीं a होता लेकिन pitfall. प्रायः It's not ये in दोष है। everyone, but usually आप विचार it तो is करो, there. Just give a जिस thought माता पिता ने हमें जन्म that दिया, पालन the पोषण parents किया, who जिन gave माता us पिता birth ने हमें and बोलना चलना took सिखाया, care of us and उस माता taught पिता us को कहने में everything, थोड़ी सी हमें देरी and नहीं लगती कि पिताजी चुप such बैठिए, parents, आपको कोई बुद्धि we नहीं, tell आपको कोई them ज्ञान that नहीं है। please keep mum पिताजी आप as चुप you रहिए, don't आपको कोई have ज्ञान, आपको कोई बुद्धि नहीं है, knowledge. थोड़ी भी देरी नहीं लगती। जब माता पिता बूढ़े And हो we जाते don't हैं even तो बेचारे ठीक से बोल नहीं skip a पाते हैं, heartbeat. So parents, when they get वो old, they're बोलने not का able प्रयास to करते speak हैं, समझाने का properly. प्रयास करते हैं, लेकिन They उनके try बच्चे समझ नहीं पाते, to बोल नहीं पाते। explain, but the kids are लेकिन unable to विचार करो, understand. जब हम लोग छोटे Just थे imagine when we were और kids हम लोग तोतली बोली, हमारी and बोली कौन समझता था, लेकिन we हमारी माँ समझ जाती थी, हमारे our पिता समझ speech जाते was थे। not clear, yet our जब parents हम used to छोटे थे understand us. When तो we were दुनिया वाले kids, जिस वाणी को small, नहीं समझते थे, हमारी वाणी, our हमारी speech, भाषा को which nobody हमारे else could माता understand, पिता समझ but जाते थे। our parents तो used to जब understand. हमारे माता पिता बूढ़े हुए So then, when तो our उनकी parents वाणी are old क्या हमें नहीं and समझनी चाहिए, their उनका speech is भाव not clear, हमें नहीं so समझना चाहिए, should not we try to लेकिन नहीं understand समझ them? आता है। But it आप यदि never हिसाब happens. जोड़ो, If कैलकुलेशन we करो, try to calculate, तो एक माँ बाप अपने संतान की जितनी सेवा और समर्पण देता है ना, parents उसका 1% भी sacrifice everything for संतान their kids, अपने माँ and बाप की not सेवा even कर सकता है, 1% कर is रहा है। not repaid by इसलिए their व्यास मुनि children. ने इसे दोष कह दिया। That is why Vyasmuni has मनुष्य जीवन mentioned का it as a बहुत बड़ा weakness. दोष है, This और is the यदि greatest ऐसा weakness दोष of human करेंगे life. And if we तो do पितृ मातृ दूष such का things, पितृ then दोष होगा, we मातृ will दोष होगा, suffer और with मातृ दोषी Pitru or पत्नी दोषी Matru dosh. पत्नी जीवन में And कभी such सुखी नहीं हो person सकता। can never be satisfied and एक happy. बार किसी ने पूछा कि हमको Someone कैसे पता चलेगा asked, कि हमारे मातृ how दोष would है, I हमारे understand that पितृ दोष है। whether we have Matru dosh or Pitru 100% तो dosh? भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता, लेकिन Because एक अंदाजा लगाया जा सकता है
how कि आप can बहुत we, मेहनत करो, what are the signs? जॉब करना, So बिजनेस करना, काम धंधे में बहुत मेहनत we करो, work hard, लेकिन फिर भी आपको उसका yet पूर्णतन फल न मिले, we are not समझो getting the result. मातृदोष That पितृदोष means है। that we are suffering from Matru देश or समाज के लिए बहुत Pitradosh. अच्छे काम करो, लेकिन You फिर भी do आपको so दोष much मिले, समझो मातृ पितृदोष है। for the welfare of society, घर में yet you are कलह हो, criticized. That घर means में झगड़ा you have हो, Pitradosh. बिना If कुछ there किए is a घर में fight कलह होता हो, समझो in your पितृदोष home, है, मातृदोष that है। means there is Pitru or Matru थोड़े dosh. थोड़े दिनों में आप बीमार हो जाते हो। If you get अरे sick भाई काहे की often, बीमारी? जमाना इतना आगे बढ़ गया है, पानी कितना फिल्टर करके पीते हैं, कितना कितना ध्यान रखते हैं, फिर भी डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर। yet we have so many diseases, although we take so much care of our body. तो समझो मातृदोष पितृदोष। If we get sick again and again, that means that we are suffering from Pitru or Matru dosh, or offenses against our ancestors or parents. पितृ पक्ष चल रहा है, So as और व्यास मुनि ने भागवत में we ये are दिया in है, this Pitru भागवत महात्म्य का श्लोक Paksh, है। in Bhagavad Mahatmya, Vedvyasji is writing this verse. और अब तो माता पिता चले गए, And now their हमको parents are जितना no more in this world. डांटना था हमें डांट दिया, They have जितना scolded बोलना था बोल whatever दिया, they wanted बेचारे to, माँ बाप की इच्छाएं भी and अधूरी रह गई, their हम all उनका जो desires कर्तव्य were करते हैं, unfulfilled. कुछ We हमारी couldn't गलती fulfill हो गया them था, कुछ हमारा because अज्ञान, we were not लेकिन अब qualified क्या or we करें? were devoid of तो अब knowledge. But देखिए, what should we do? मैं सॉल्यूशन के ऊपर आपका So कंसंट्रेशन करना चाहता हूँ। I am focusing on वेदव्यास जी ने कहा ये 7 दोष the हैं, solution. मानो जाने और अनजाने में And माता पिता Vedyaji says that क्रोध हो गया हो, द्रोह हो गया knowingly हो, or माता unknowingly, पिता के if you have प्रति offended जाने your अनजाने में parents कुछ गलती हो गई हो हमारे से, एक पुत्र से, by us, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? then what is the solution? और फिर आगे के 6 पॉइंट जिस पर हमने चर्चा की, हम लोग जीवन में असत्य बोलते हैं, And all the उसका 6 solution qualities क्या that है? we हमारे discussed अंदर that we कठोरता है, have, दूसरों की that is प्रगति को देख के hypocrisy, जलन होती है, उसका jealousy, सॉल्यूशन क्या है? or envy, यदि हमारे and जीवन में लोगों को untruthfulness, दुख देखकर सुखी होने की भावना हमें violence हिंसक towards लगती है, इसका other, सॉल्यूशन क्या है? तृष्णा what के is the कारण solution? आकुल व्याकुल है, तो And इसका if we are सॉल्यूशन क्या distressed है? because of जीवन our में हम desire शास्त्र for धर्म sense का पालन नहीं gratification, करते, इसका or we are सॉल्यूशन not क्या है? following the dharma भक्ति ashram, का दंभ, पैसों का दंभ करते and हैं, if we are इसका hypocrite, सॉल्यूशन क्या है? और then what is the solution? मातृदूष्य का, And मातृदोष और what is the पितृदोष, solution इसका for सॉल्यूशन क्या है? offenses against our इन parents सारी or सारी ancestors? वस्तु का केवल एक ही सॉल्यूशन So है, there is only जो one इस श्लोक के solution, अंत में which is in the वेदव्यास जी के end, कलम से लिखा गया है, which was written by और वो Vedvyasji, है and that सप्ताह is यज्ञेन कलो Saptah पुनन्ति। Yagin Kulo मैं एक Punantite. शब्द के ऊपर आपका मन और लेकर जाऊंगा, कलो, कलयुग में, Kalo means स्पेशली Kali कलयुग Yuga. का सॉल्यूशन बता रहे हैं। So, especially ये for न तो Kali Yuga, सतयुग this का is the solution है, solution. न त्रेता का, न द्वापर का। इन सारे दोषों से मुक्त होने के लिए इस घोर कलयुग में सरल सॉल्यूशन क्या है? तो कहते हैं एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उपाय And the है, only solution is Saptaha Yagyena. भागवत सप्ताह, That is Srimad Bhagavatam यदि हम Katha श्रवण for करते 1 हैं, week. If we श्रीमद् listen भागवत for कथा का आयोजन the करें, Bhagavatam श्रीमद् Katha, or भागवत we कथा का श्रवण organize करें, the तो Bhagavatam इन Katha, सारे दोषों से then we पुनन्ति will get में relieved हम of परम all पवित्र हो these सकते हैं। offenses and फिर चाहे shortcomings, मातृदोष क्यों न हो, पवित्र हो जाओगे, and we will पितृदोष, be इन purified. सारे दोषों से पवित्र हो जाओगे। करना क्या होगा? What are we सप्ताह supposed to यज्ञ, do? We have to perform भागवत कथा Saptah रूपी Yagyan. प्रेम That यज्ञ is, करना होगा, we have to भागवत कथा perform रूपी ज्ञान यज्ञ करना होगा। the इस love, भागवत कथा रूपी knowledge ज्ञान यज्ञ yagna से इन of सारे दोषों Bhagavatam से मुक्त हो सकते हैं। to get relieved of all असत्य, these मत्सर, हिंसा, weaknesses. तृष्णा, आश्रम, दंभिका और मातृदोष, पितृदोष, इन सारे दोषों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भागवत कथा का श्रवण। और हम लोगों का कितना सौभाग्य है, And how fortunate कि we हम all ऐसे are पावन पितृ पक्ष में, that वैसे तो in साल this भर, auspicious लेकिन Pitru इस Paksh पवित्र and श्राद्ध although पक्ष में throughout the year, इन but सारे especially दोषों in से this मुक्त होने Shraddha के लिए Paksh, we पवित्र are भागवत गाथा, भागवत listening to गीता the का नित्य pastimes of the श्रवण करना Lord है।
and his devotees, that is Bhagvatam. प्रशंसा की जाए, हमारे भाग्य की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है भक्तों. We cannot enumerate our fortune क्यों? क्योंकि हमें भागवत का आश्रय, because we are under the shelter of Bhagavatam, and the only solution for all these problems is Srimad Bhagavatam. So let's progress towards Bhagavatam. So let's take a small break for announcements and then we will proceed further. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. बहुत ही सुंदर भागवत कथा के इस द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में आपने यह सुंदर श्रीमद् भागवतम की महिमा हम सबको रसास्वादन कराई कि हम सब अनेक अनेक दोषों से युक्त है, अनेक अनेक वीकनेसेस है हमारी, जिसमें प्रमुख आपने 7 वीकनेसेस हमें यहाँ पर बताई इस कथा के अंतर्गत. तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी, किस प्रकार हम सब ने यहाँ पर प्राय जो कलयुग का व्यक्ति है सत्य से हीन है, he is cheating himself by lying unnecessarily, और साथ ही साथ बहुत मत्सरता उनके अंदर अधिक प्रमाण मात्रा में होती है, और तृष्णा कुलश्चा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि we are always into various desires, बहुत सारी कामनाएं हमारे हृदय में हैं, और साथ ही साथ आश्रम धर्म वर्जिता. प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि मनुष्य धर्म के मनुष्य जीवन में, मतलब जब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो वर्णाश्रम धर्म का हमें पालन करना चाहिए, जिसमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम. इस विषय में आपने कुछ संक्षिप्त में बताया. थैंक यू प्रभु जी. और साथ ही साथ ये दंभिका, दंभ के ऊपर में बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की कि किस प्रकार व्यक्ति जो नहीं है वो होने का दंभ करता है. तो हमारे किसी आचार्य ने ये भी बताया है कि प्राय ये बहुत ही इजी हो जाता है, सरल हो जाता है व्हेन यू आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. जब भक्तों के संग में होते हैं तो भगवत स्मरण और भगवत चिंतन बहुत ही सरल हो जाता है. परंतु उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि यू आर व्हाट व्हेन यू आर अलोन. जो भी हम एकांत में जो हमारी स्थिति है वही हम है. बाकी इसके अलावा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो एक वो दंभ का आवरण हमारे अंदर आ जाता है और हम वो प्रस्तुत होने का प्रयास करते हैं जो हम नहीं है. तो ये बहुत सुंदर है कि आचार्य वैष्णव ने बात बताई कि कैसे हम सबको इस दंभ से ऊपर उठना चाहिए, और इनसे ऊपर उठने के लिए सतत भगवान कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी उस वास्तविकता से हम अवगत हो सके और प्रयास कर सकते हैं कि उस अनुसार अपने जीवन को ढाल सके. तो ये सुंदर बात आपने बहुत ही बताई, अद्भुत लगी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. और साथ ही साथ पितृ मातृ दोष है ना, जो हम सब प्राय ऑलमोस्ट वी आर हैविंग दैट इन आवर लाइफ. बहुत ही रेयर ऐसे भक्त होते हैं जिनके जीवन में कृष्ण भक्ति इतनी स्मूथ चलती है और जीवन में कोई विघ्न नहीं है. कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह देते हैं ना, इस जगत को दुखालयम शाश्वतम. दैट मीन्स इन समवेयर और अदर वी हैव कमिटेड दैट इस प्रकार के कर्म किए हैं जिसके कारण हम सब यहाँ पर इस भौतिक जगत में हैं, और दुख दोषानुदर्शनम, इस प्रकार दुखों के दर्शन करते रहते हैं आए दिन. सो प्रभु जी बहुत ही सुंदर इस और यहाँ पर भागवत की महिमा इस श्लोक में कितनी सुंदर लगी कि इस विशेष कलयुग में यदि हम इन चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं, इस प्रकार की जो वीकनेस से ऊपर आना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का पाठ कराना चाहिए या फिर भागवतम को श्रवण करना चाहिए. तो श्रीमद् भागवतम की महिमा बहुत ही सुंदर श्री वेद व्यास महाराज जी ने इस भागवत महिमा में हम सबको बताई, और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर इसका विस्तार किया और हम सबको रसास्वादन कराया. थैंक यू सो मच प्रभु जी. और बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं. हमारे त्रिवाल परिवार की सुंदर सहयोग के कारण इस प्रकार यजमान सुंदर आयोजन करते हैं और हम सबको एक अवसर मिलता है कि हम सब यहाँ पर जाकर अधिक समय व्यतीत करें.
जिससे कि हमारे अंदर इस प्रकार के गुणों का विकास हो, ये जो गुणों से हम रहित जीवन जी रहे हैं उनका विकास हो, और हमारा हृदय कोमल निर्मल बने, जिससे कि भगवान उसमें वास कर सके. So thank you so much, Prabhuji, or thank you so much to this Agrawal family for hosting this Bhagavad Katha and given us an opportunity to associate with these devotees and hear something which is actually beneficial for all of us. ये सबसे अधिक हमारे लिए कल्याणकारी वस्तु है ये श्रीमद् भागवतम का पाठ है, भागवत कथा श्रवण करना है इस कलयुग विशेष, जिससे कि हम सब अपनी वास्तविकता की प्रति उन्नति कर सके. So thank you so much, Prabhuji. Thank you so much to the host family for hosting this wonderful event where we are एकत्रित होकर इस प्रकार भागवत कथा रसपान कर रहे हैं. थैंक यू. और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर पितृश्राद्ध पक्ष में इस कथा का लाभ ले रहे हैं. ये भी एक इतनी अद्भुत महिमा है, जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि पितृ की भी कितनी महिमा है, जो कि हम आने वाले दिनों में भी श्रवण करते रहेंगे. और साथ साथ में प्रभु जी बीच बीच में बताते रहते हैं. जैसे कल ही प्रभु जी ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति जब शुद्ध भक्ति करता है तो उनके सारे पितरों को वह तार देता है. तो हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे जो कर्तव्य है मनुष्य जीवन प्राप्त कर हमें जो कर्तव्य मिले हैं वो तो हमें करना ही है, परंतु साथ ही साथ भगवत भक्ति, भगवत चिंतन, ये हमें भी और अधिक विशेष करना है मात्रा में, जिससे कि हम हमारे पितरों को और अधिक ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सके. उनको ना कि केवल पितृ लोग तक सीमित रखे, परंतु उन्हें भगवत धाम तक पहुंचाने के अधिकारी बनाना चाहिए हमें. तो ये केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव है. तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भक्ति करें, साथ ही साथ अपने जो नियत कर्तव्य है जो हमें निहित किए गए हैं, जो हमारे भाग्य में है, जो हमें करने हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसको भी फुलफिल करना है. सो ये भागवत कथा का बहुत बड़ा लाभ है कि हम भागवत कथा श्रवण करें और अपने कर्तव्य को पालन कर सकें. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी. आइए निवेदन करें प्रभु जी को कि वह शेष कथा को श्रवण कराएं. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए, So telling the glories of Srimad Bhagavatam, Shri Sud Goswami states on the question that Narad Muni has organized Bhagavatam Katha and why he did it. Is Bhagavatam so glorious? So it was stated that Naradji met Sankadik and they asked him the reason for his distress, and Naradji said that I am distressed that I went to Vrindavan and I met Bhakti Devi, that is devotional service personified, and she was extremely distressed. Her son's knowledge and detachment were old and she was crying vehemently, and she requested me to make her sons alive. And at that point, Narad Muni so he tries to be compassionate to her and tells the glories of the path of performing devotional service. And we discussed it yesterday that tu means definitely, or devotional service or bhakti, you are very dear to Lord Shri Krishna, even more
than his कृष्ण own को life. बहुत प्रिय हो You are और त्वया beloved आहुर of भगवान the Lord, और भक्ति के द्वारा ही भगवान and through devotional याति service, नीच गृहेषु अपि he even भक्ति से रीझ कर भगवान enters याति माने चले जाते हैं कहाँ to नीच गृहेषु the अपि lower class, नीच से नीच लोगों के घर पर भी भगवान चले and जाते he हैं goes to the home of भक्ति से प्रसन्न होकर the तो कल lower हमने इसी श्लोक को समझने class के of लिए society. So, सदन कसाई की for कथा सुनी थी। understanding याद this, है? we've heard the देखा सुनने pastime वालों of सदन Sadan Kasai, मांस बेचने वाले परिवार में who was a पैदा meat लिया, seller, लेकिन भक्ति करता था yet तो he भगवान used to शालिग्राम perform के devotional रूप service, में and सदन the कसाई Lord बन गए। manifested as Shaligram नारद मुनि and अब भक्ति की wanted to दूसरी stay बात with him. बताते हैं, नीचे श्लोक बदल चुका So, है। in the next verse in front of your नारद जी कहते screen, हैं कि भगवान Naraji mentions भक्ति से ही that प्राप्त होते हैं, the Lord can manifest only न तपो भी न by वेदेश्च। performing भगवान devotional श्री service. कृष्ण न तो So Lord तपस्या Shri से Krishna प्राप्त हो सकते हैं cannot be और न attained वेदेश्च, by न वेदों का yoga अध्ययन करने practices से प्राप्त हो or सकते by हैं, knowledge or न jnana कर्मणि yoga. अपि कर्मणा। न कृष्ण ज्ञान से मिलते हैं, न कर्म We करने से cannot मिलते हैं। attain him by following ये तो गीता karma ने दिया। system or कितना बड़ा समाज कर्मवादी है। jnana कर्मण yoga. एव अधिकारस्ते So मा there are फलेषु so many कदाचन। people who are focused मुंबई के on karma. प्रत्येक दुकान पर लिखा होता है, दुकान On हमारा every मंदिर है, shop of ग्राहक Mumbai, हमारे भगवान this है और that ग्राहक को माल बेचना this हमारी भक्ति है। ये सब कर्मवादियों के सिद्धांत। तो कर्म this को तो सीधा निकाल ही दिया shop नारद is मुनि our ने temple कि न and कर्मणा, customer is भगवान श्री our कृष्ण कर्म से प्राप्त customer नहीं होते। is कुछ लोग कहते हैं ना our कर्म करो, कर्म गधा भी God. करता है। कर्म So करना चाहिए, लेकिन these are कर्म all करना the तो बहुत बड़ी philosophies चीज of नहीं a है। karmavadi. So गधे और even बैल भी कर्म करते a हैं। bull कर्म किया, कोई and a बड़ी बात हो गई। donkey performs केवल karma or कर्म actions. से कृष्ण नहीं मिलते। If we just do on न तपो, आप श्लोक को ध्यान performing देखिए, न तपो, action, केवल we won't कठोर attain the तपस्या Lord. से भी भगवान नहीं मिलते। And by हमारे performing भारत में एक austerity धर्म alone, चला है, we नाम cannot लेना नहीं get the चाहता। Lord. मुझे तो सारे There धर्म is अच्छे लगते हैं, a क्योंकि सभी धर्मों में कुछ religion, ना कुछ तो सत्व तत्व छिपा है। I वो like बेचारे all of अज्ञान them के because कारण some of फिजूल मेहनत करते all हैं, of तब them थोड़ी सी दया have आती है। some अपने principles and हाथों से philosophy. बाल नोचते हैं, नंगे So पांव रोड पर they चलते भटकते रहते हैं just और सोचते tear हैं their कि hair ये करने से and they भगवान walk मिलेंगे। लेकिन यहाँ नारद on मुनि कहते हैं, earth न तपो, barefoot and प्रभु they गणेश think that they तपसा will न attain the Lord. याति। But केवल here तपस्या करने से, कोरी तपस्या it is करने mentioned से that by just performing भगवान नहीं austerity, मिलते। we are not going to attain बहुत the ही Lord. सुंदर श्लोक है। मैं आपको This is इस such a कथा में beautiful जो जो verse. श्लोक दिखाऊंगा ना, ये Whatever बाइबल से verses जुड़ा I हुआ am एक श्लोक है। showing you are मेरा उद्देश्य है कि इस verses पूरे that we पितृ should पक्ष में by heart, 101 and श्लोक के ऊपर कथा करूं, my यही goal अपना is मैटर to है। have लेकिन बता दिया, 101 ये मेरा verses. संकल्प है। This is तो my ये vow. भागवत के 101 श्लोक बाय हार्ट And करने these लायक, मैं वही श्लोक 101 आपके सामने verses रखूंगा। from Bhagavatam are इसलिए very आपको नोट करना है तो करते जाइए, important नहीं and we नोट करना all छोड़ should दीजिए learn. सब। So you should note if ये you चुने want. हुए मोती है, हमारे गुजराती में के These are વીણેલા the મોતી, selected વિખરાયેલા pearls મોતી નથી, આ વીણેલા મોતી। 18,000 श्लोकों में से 101 out of श्लोक आपके 18,000 सामने verses. प्रस्तुत हो रहे हैं। These 101 तो verses न would तपो, be presented. तपस्या से भगवान नहीं मिलते। फिर आगे कहते हैं न वेदेश्च, वेदों का अध्ययन करने से And भी by भगवान नहीं studying मिलते। the Vedic scriptures or Vedas, you will हमारे not यहाँ attain the Lord. द्विवेदी, आप कौन? मैं द्विवेदी। तो The- तीसरा आता है In मैं Bharat त्रिवेदी, Varsh, we have तो आता है मैं Dvivedi, चतुर्वेदी, Trivedi, Chaturvedi, etc. तो और आता है मैं वेदांती। And then there is a पहले Vedanti. द्विवेद, चतुर्वेद, त्रिवेद, वेदांत, ये इससे भगवान नहीं मिलते। So by this, ऐसे we will लोगों not से attain the भगवान Lord. दूर भागते हैं। The Lord runs away from सो them. न तपो न वेदेश्च न ज्ञाने अपि, ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते।
And we cannot ये attain ज्ञान the मार्ग Lord गया, by knowledge. वेद मार्ग गया, कर्म कांड भी गया, यहाँ तो सब चारों मार्ग चले गए, इन चारों मार्ग से भगवान नहीं मिले। So all these बहुत अच्छी 4 चीज है, paths we cannot attain the ज्ञान Lord. अच्छी चीज है, Knowledge ज्ञान is की good जरूरत है, and it is लेकिन क्यों? necessary. But why? कृष्ण को पाने के लिए नहीं, To कृष्ण get ज्ञान से the थोड़ी Lord, मिलते हैं। Krishna उद्धव कितना बड़ा cannot ज्ञानी be था, attained by लेकिन knowledge. प्रज्ञाता गम नहीं हो Uddhav सकता, was such वो a तो जब knowledgeable घर में person, गया तब जाकर but प्रेमी yet होकर he was उसको unable समझा। to attain the Lord. But when he went तो to ज्ञान Raj की जरूरत है, Vrindavan, जब तक he attained हमारे जीवन में the love. अज्ञान है, उस अज्ञान So को मिटाने के लिए ज्ञान till की the जरूरत point है। we are ignorant, we जैसे should अज्ञान gather निकलेगा, knowledge to तो remove फिर अज्ञान that का ignorance. कांटा भी फेंको, But ज्ञान भी as फेंको, soon as क्योंकि ज्ञान से we भगवान get the मिलते हैं। knowledge और and कर्मणा, path to attain केवल Lord, कोरा कर्म then we करने से should भगवान नहीं keep the मिलते। knowledge also तो भगवान aside. कैसे मिलते हैं? दूसरी So the लाइन, Lord is achieved or हरि attained. ही माने निश्चित How? ही, Hari He. That हरि is, जो है definitely we भगवान will राम, attain भगवान Hari, कृष्ण, भगवान Ram विष्णु, or Krishna or निश्चित Vishnu. ही साध्यते, उस हरि को साधा जाता है, उस So हरि को प्राप्त किया we can जाता है attain or केवल focus एक ही चीज on से, the Lord और वो है by भक्ति। only one thing, and that is by हरि ही performing साध्यते loving devotional भक्त्या, service towards the Lord, that is हरि को bhakti. साधा जाएगा एक और मात्र एक, उनकी भक्ति करने से। And we कहा can जाएगा only attain the परमार्थ Lord है, तो नारद only जी ने by जब उल्टा performing हो जा दिया, devotional service परमम towards the Lord. तत्र And what is the गोपिका, proof? The proof is the इसका gopis ज्वलंत of Vraja. प्रमाण है ब्रज की गोपियां, उन ब्रज की ब्रजांगनाओं के पास The कोई तपस्या inhabitants नहीं of थी। Vraja मुझे बताइए had किस not गोपी ने performed any तपस्या की? austerity. Just tell me which उन gopi ब्रज had की performed ब्रजांगनाओं austerity. के पास न वेदों का ज्ञान था, They had no न knowledge कोई of साधारण Vedas, ज्ञान था, न कोई no कर्मकांड था। any ordinary हाँ, knowledge, गोपियों ने or भक्ति की थी। they never भक्ति in the performed any sense, karmakand, कृष्ण से but प्रेम they किया। have performed bhakti, that is और loving कृष्ण devotional मिलते service हैं towards the प्रेम Lord. से, And भक्ति Krishna करने से। is pleased by performing एक devotional बार service towards Him भगवान and by कृष्ण love. बीमार हो गए। Once Lord Krishna वैसे became कृष्ण का sick. देह जो है ना, चिन्मय है। Although his body कृष्ण तो is सच्चिदानंद transcendental, विग्रह है, he is लेकिन द्वारिका में रहते हुए द्वारिका Satchit Anand बीमार हो गए। personified. बहुत But in इलाज Dwarika किया, he became sick. अनेकों प्रकार की All the दवाएं, medicines अनेकों प्रकार and का इलाज, ways were ठीक नहीं हुआ। applied, but सभी he लोग was not cured. परेशान, Everybody कब was ठीक होंगे? deeply worried. When will he be cured? नारद मुनि आए। Then Narad नारद Muni जी ने ये सब arrived, आंखों से देखा है, and इसलिए Narad ये ji सब has बोल seen पाते हैं। it और with his सच कहूं, own नारद eyes. जी ने That is why केवल he वो is able to speak. अपना अनुभव ही सुनाया, And he और has इस just अनुभव shared से वो his अनुभव मैं आपको बता experience. रहा हूँ। And let me share that experience with all of you. नारद जी आए और कृष्ण को Narad ji बीमार came, देखकर वो तो and when he रोने saw लगे that Krishna is कि sick, प्रभु ये he कौन सा started लीला, crying ये क्या चल that, रहा है? what is this pastime of yours? कृष्ण ने कहा, Krishna नारद said, O मैं ठीक हो Narada, सकता हूँ, I can एक be उपाय cured. है। There is अरे बोलो one बोलो प्रभु, solution. कोई भी उपाय So हो, just ये give me नारद the जी कर दें। solution. I will make it happen. कैसे? बोले नारद मैं Hmm. तुरंत ठीक हो जाऊंगा, Krishna says that बस I एक can be काम करना instantly होगा, cured. You just have to do one thing. मेरे किसी भक्त के चरणों की रज You have to bring मेरे the सर पर lotus लगा dust दो, of my मेरे devotee भक्त and की put रज it मेरे on मस्तक पर लगा दो, on my मैं head, तुरंत ठीक हो जाऊंगा। and I will be instantly cured. नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? Narad ji said that रुको रुको, that's not an impossible feat. 16,108 भगत तो आपके घर पर ही है। He said that you already have मतलब कृष्ण को जो दवाई चाहिए 16,108 थी, devotees वो in your 16 home करोड़ itself. फार्मेसी तो उसके घर पर थी। बोले प्रभु इसमें कौन सी देरी, वो तो तुरंत गए So रुक्मणी के he पास। went instantly to Rukmani रुक्मणी जी, ji आपके पति and द्वारकाधीश बीमार हैं, said that तुरंत ठीक हो जाएंगे, your इसके husband सिर्फ can be दो ही cured. उपाय हैं। बोले He क्या? said, बोले how? आपके चरणों Said, की रज दे दो if you give the dust और of your lotus feet द्वारकाधीश के मस्तक and we पर will put लगाऊंगा, it वो on तुरंत his ठीक हो head जाएंगे। रुक्मणी जी and he बोली will be नहीं, cured. इतने Rukmani बड़े ji ईश्वर हैं, refused. मैं He said उनकी that दासी हूँ और the Lord मेरे is so प्रभु के great and I am प्रभु के her मस्तक
his servitor, how can we put my dust on his feet? This is such a grave sin. I will have to suffer in hell for the same. And he went one by one to all wives of Krishna. Naraji was thinking that, what kind of wives are these? He's thinking about others, but he's not thinking that he could have given the dust of his lotus feet. But how can a servant give his dust for putting on the head of the Lord? Krishna arose and said that, did you able to bring the dust? He said that there are so many devotees, but nobody wants to perform this grave sin. So he said that can you do one more thing, a favor? He said that just go to Vraj and maybe your desire will be fulfilled. And Naraji went into Vraj, and all the gopis were filling their pots. And the Naraji said that I just came after seeing Krishna. The gopis kept everything aside and came running towards the lotus feet of Naraji and asked, how is our Shyam Sundar Krishna? Is he well? Naraji said, he's not well. He said that he is suffering from fever from so many days. He is very sick. The gopis got very, that what is the cure? He said that they have done so many things, but he was not cured. There is one solution. If a devotee of the Lord gives the dust of their lotus feet, and if you put it on the forehead, then he will be cured. The gopis of Vraja started dancing and filled bags after bags of the dust and put it on the head of Lord. So Nanaji says that if we do this, it will be a grave sin and you will have to suffer in hell. Gopis said that you should move fast. Why? Not only one, but for crores of births, we can go to hell, but we cannot tolerate to see the Lord unhappy and distressed. So we cannot see him even for a moment distressed or unhappy. And Narad Muni gave the dust of the dust of the inhabitants of Raja, and he was cured. And that principle Narad Muni got, and he is telling the same to Bhakti Devi personified. He says that the Lord can only be attained by performing devotional service towards him. And the example for that same is the gopis of Braja. They had not performed any austerity or karmakand, or they have any knowledge, etc. But the only thing they had was the love towards the Lord. And that is bhakti or seva or service. So thus he sings the glories of Bhakti Devi. And he said that you don't be worried. I will try to rectify the situation. So Naraji started speaking mantra of Vedas
in the ears of Gyan or Vairagya, that is knowledge and detachment personified, then they were not cured. Then there was a oracle that the mantras of Vedas will not cure them unless you perform some Sadpurush and Satkar, then only it will happen. And for getting the answer for the same, he went to Badrinath, and there this pastime started, where the Kumaras met Naraji. And Naraji said that I am distressed because of this situation, and I want to know what is a good deed and who is a perfect gentleman. The Sankadik says then, in this world, the greatest piety is to perform yajna or fire sacrifice, as it is for the welfare of the whole society. And there are two types of yajna. First is dravya yajna, that is with basic ingredients, and the other is jnani yajna. And far greater than both of these is prem yajna. And Srimad Bhagavatam is prem yajna. So ultimately in this world, the greatest piety in this world is the Bhagvat Katha, that is the prem yajna. And Narad Muni said that as you have answered this, that means that you are the gentleman. And Naraji came and he invited all the sages and saints and gathered all types of fruits, etc. for them. And he invited all the sages with their disciples, etc. And everybody reached there. And as soon as Sankadiks sat on the Vyaspit, and so the katha or the pastime has not yet started, but when bhakti and gyan vairagya heard that, they were able to stand, and they walked from Vrindavan to Haridwar Anandvan, and there they heard the Bhagvatam Katha. So they all heard the pastimes of the Lord, and as soon as they started listening, their distress was getting removed gradually, and their old age was also getting cured, and they became young again. And on the seventh day, at the time of conclusion, at the time of Sankirtan, everybody was dancing, and Lord Vishnu manifested, and he gave the benediction that from today, if someone listens to Bhagavatam, then their heart will be filled with devotional service towards the Lord, detachment and knowledge. And if we want to manifest all these in our heart, then we should listen to the Bhagavatam. Another glory of Srimad Bhagavatam, it's in Padma Puran, which is mentioned in Mahatmya of Bhagavatam. So after 128 and a half years, Lord Shri Krishna returned to his abode after performing his pastimes. His whole clan was destroyed, and he has decided to go back. He went with his friend to Prabhas, and he told Uddhav, I just want to say something. Uddhavji said that even I'm worried that there is something wrong, but I'm not able to point it out. So please let me know what
is तब it? कृष्ण कहते हैं, Then Krishna says, उद्धव "Oh उद्धव, Uddhava, इस संसार को छोड़कर नित्य लीला में now I want to वृंदावन leave वापस this जा रहा world हूँ। and I want to return back to इतना Golok कहते Vrindavan." उद्धव तो गिर गए, ढेर हो गए And कि प्रभु Uddhav आप ji नहीं जा सकते, और fell यदि आप unconscious and जाओगे you should तो not go. मुझे अपने And साथ ले जाओ, if you want to मैं go, आपके then साथ चलूंगा। you should take me along with you. नहीं नहीं उद्धव, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो प्रभु आप Krishna हमें says that छोड़कर you जा, have to stay here. प्रभु आपका यहाँ पर आना, आप Uddhav इस ji says धरती that पर क्यों आते your हो? arrival आप here अपने on this भक्त के earth लिए इस धरती पर, is उद्धव जी ने for बहुत सुंदर कहा, the pleasure श्लोक of डाल your दिया इसमें devotee. वाला एक, If you see the verse in front of ये your उद्धव जी screen, के मुख से निकला हुआ। this is the verse अतः spoken by Uddhav सस्तु ji. दयाम कृत्वा भक्त वत्सल माव्रज। हे भक्त वत्सल भगवान, हे कृष्ण, मुझे छोड़कर माँ व्रज Oh, आप मत जाइए, merciful Lord, छोड़कर आप मत don't जाइए। leave me alone and अतः सस्तु go. दयाम कृत्वा, मुझ पर थोड़ी सी दया कर दीजिए, Please be merciful कर दीजिए। मानो and कृष्ण do me कहे a कि मैं favor. क्यों न जाऊं, And if Krishna says that why should I तब not उद्धव जी go, दूसरी लाइन में कहते हैं, then Uddhav ji says, भक्तार्थम सगुणो जातो। प्रभु आप इस धरती पर आते हो भक्त अर्थम, अपने भक्तों के लिए, so you और come आप here अपने भक्तों के for लिए your devotees. सगुणो अपि निर्गुणो अपि सगुणो जातो और निराकारो अपि चिन्मय। आप निर्गुण हो, So सगुण you से are परे हो, above all the लेकिन three अपने modes of भक्तों material के nature. सत्य But रज for your तमस से devotee, बनी हुई इस प्रकृति में आप प्रकट होते you हो। manifest in this material और world. निराकारोपी, प्रभु आपका And आकार जो है हमसे अलग है, you're लेकिन different फिर than भी आप us. नर Yet अवतार स्वरूप मनुष्य के रूप में प्रकट होते take हो। a किसके human form लिए? and manifest. भक्तों For के what? लिए। तो For आपका the भगत pleasure इस of your धरती पर devotees. है और आप And हमें your छोड़कर devotee नहीं is जाओगे। on the earth and you want to leave. आपका जन्म, आपका अवतार Your birth अपने and भक्तों के लिए incarnation होता है। is for your devotees. ये तो 5000 वर्ष पहले की बात कि भगवान अपने भक्त के लिए आते So हैं। this is ये 5,000 तो years कल का back. इतिहास आपको But कहूं। let me share yesterday's history with you. हमारे गुजरात सौराष्ट्र जूनागढ़ के संत नरसिंह मेहता Our एक दिन sage from Junagadh, Narsi Mehta, who was tired and came back to his home, and he told his sister-in-law to give him some water. Bhabhi was tired और जोर से क्रोध करके चिल्लाने and लगी she got angry and और upset ताना देते हुए and नरसिंह मेहता की chastised ने him कहा, "ओ, and said, पानी मांग रहे हो, "You're asking me बड़ी water कमाई करके आए हो ना लाला जी, as if बहुत you बड़ा have पैसा earned कमा कर आए हो ना, so much money. मैं क्या तुमको पानी नहीं पिलाऊंगी, ऐसे पानी लेकर आई तो सही, लेकिन धड़ाम And करके ग्लास रखा, आधा पानी she बाहर, bought the water, but अपनी she बेइज्जती करके वो पानी का ग्लास gave दिया। it with after नरसिंह humiliating मेहता him. बिना Narsi बोले Mehta, उस नगर से बाहर चले गए। without speaking a word, went out of the एक village. शिवालय था, शिव जी का मंदिर And था। there was a Shiva 7 temple. दिन तक नरसिंह For मेहता ने न 7 कुछ days, खाया न कुछ Narsi पिया। Mehta वो didn't शब्द eat उसी or कमरे drank में अपना anything धक्का मार दिया। as he was distressed और by फिर तो नरसिंह the मेहता ने behavior केदार of राग छेड़ा his और जैसे ही sister-in-law. केदार गाया, And then he देवादिदेव महादेव कैलाश sang से in नीचे Kedar आए। Rag and Devadidev कथा Mahadev सुनते हैं। manifested. You might be शिव जी ने aware, कहा, कुछ मांगो, बोले मुझे Shivji कुछ नहीं asked चाहिए, बोले कुछ तो मांगना होगा, इतना देर asked for से a आए हो। benediction. He said that you कहा need, कि I रास don't लीला want के anything. दर्शन करा He दो। said that जब से नरसिंह okay, ने रास लीला if देखी, you can कृष्ण के प्रेम में पागल give हो me गए। darshan of Ras Leela. नरसिंह मेहता The, कृष्ण after के seeing भक्त that, बन गए। फिर तो हाथ Narsingh में Mehta कमल became लेकर a great रात devotee दिन of Lord Shri Krishna, and day and night श्री he used to do Sankirtan. गोविंद भज मन श्री राध, ये जूनागढ़ी आवाज है। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे
जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अब तो रात दिन हरि का नाम, हरि कीर्तन। So he got engrossed in the chanting of the holy names. And once it so happened that there were some sages in Junagadh and they wanted to go to Dwarka and they wanted to put the flag on Dwarka and offer food to Brahmanas. So they had some money and they thought that if we take this money, it's far and it will be risky. So if we give it to some merchant and if he has a branch in Dwarka, we can take it from there. That time we didn't have credit cards, etc. So these sages put an inquiry that from Dwarika, if I have to make a hundi or an agreement, then whom should we approach? So he said that there is one very filthy rich person who takes and gives the money. And who is that? Is it Narsi Mehta? But he's a person who is always engrossed in Sankirtana. So they came to Narsi Mehta and said that we want to go to Dwarika, we have money, but we're not sure to whom we should give it so that we can get that money in Dwarika. If you keep this money, then we can go to Dwarika. So Narsi Mehta thought that they have a great goal and they want to go to Dwarika. So he was unable to refuse them. So they agreed. And from where will we get the money in Dwarika? So Narsi Mehta said that our merchant is Savaliya Sept, and you will get the money. नरसी के पास जमा करा के सारे संत निकले. So they all deposited their money to Narsi Mehta and they went to Dwarika. And after reaching Dwarika, they started inquiring about Savaliya Sept. They said that we have deposited the money in Junagadh and we have supposed to get that money from him. Where is his shop? People started laughing. They said that there is no one with that name. You have been cheated. You have been robbed. There is nothing like that. On other hand, Junagadh, Narsi Mehta is pleading to Lord that those sages will be buried. Please give this money to them. And the sages were distressed and they were about to go out of the village. हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी. हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी.
हे मने एक तमारो आधार रे श्यामला गिरधारी। हे मने एक तमारो आधार रे श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। हो रसियो रूपाळो रंग रेलियो, रसियो रूपाळो रंग रेलियो, घेर जाऊ गमतू नथी। हे मारे माथे छे यमुना जीनी हेल रे, घेर जाऊ गमतू नथी। रसियो रंग रेलियो, घेर जाऊ गमतू नथी। अमे गायू दोया विना आविया, घेर जाऊ गमतू नथी। अमे गायू दोया विना आविया, घेर जाऊ गमतू नथी। हे पछी जो जो वाछरडाना खेल रे, घेर जाऊ गमतू नथी। पछी जो जो वाछरडा ना खेल रे, घेर जाऊ गमतू नथी। रसियो रूपाळो रंग रेलियो, घेर जाऊ गमतू नथी। एवो रसियो रूपाळो रंग रेलियो, घेर जाऊ गमतू नथी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। हे मने एक तमारो आधार रे श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। So सारे साधु संत परेशान। So all these sages and saints were distressed. On the other hand, Narsi Mehta is praying to the Lord that please protect my honor. On the outskirts of Dwarika, and Shamaliya Seth manifested, and he came running towards them and told them to stop. He said that, who are you? He said that, I am Savaliya Seth, whom you were searching. And keep this money. You had deposited this money to Narsi Mehta, and please forgive me. It took me a while to reach here. And the Lord is so the Lord is asking for forgiveness on behalf of Narsi Mehta. So for the devotees of the Lord, he manifests as he manifested for Narsi Mehta. And the sages wrote a letter to Narsi that we got the money and don't get worried. And when Narsi read that letter, he started crying vehemently that how merciful the Lord is. So Uddhavji said that you manifest for the welfare of your devotee and you want to leave me and go. Krishna says, Uddhav, you will have to stay here
and preach devotional service to others. And at that time, Lord Sri Krishna, but Uddhav ji was there. Krishna entered Bhagavatam in front of Uddhav ji. Krishna converted himself into Bhagavatam in the end of Dwapar and beginning of Kali Yuga. Krishna manifested as Bhagavatam, and we have taken the shelter of Bhagavatam, which is nothing else but a form of the Lord Himself. And we all are listening to such Bhagavatam Katha. So today we have crossed the time. We will conclude today here. We will continue the Katha. You all please come, and I would like to be thankful or present our gratitude to the organizers, Manoj and Nidhi Agarwal, and their mother, who is listening from Kathmandu, Nepal. So remembering the ancestors of this family, and we are listening to the Katha for welfare of all ancestors. So I am really thankful to all of you. So let's conclude the session with Jai Jaikar. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्ण चंद्र भगवान